मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड का एंड गिवन गुड्स पैराडॉक्स का। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंक्रीज इन डिमांड एंड द डिक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड? सिंपल, जब प्राइस लेवल में कोई चेंजेस नहीं होता या प्राइस स्टेबल होती है और उस स्टेबल प्राइस पे ही यदि डिमांड बढ़ती है या डिमांड घटती है, that's known as an increase in demand and the decrease in demand. See, have a brief glimpses of this notes which is made by me. Listen, here in o-axis the price is OP and the demand curve is a DD. Okay, but at the same price the demand increases from D to D11. Okay, now the price is not being changed. The law of demand says that the price reduce when the demand increase, but as far as this diagram is concerned, the prices remains flexible, but however the demand is increasing from D to D11. So the transformation from the DD to D11 is known as a increase in demand. On the contrary, if we talk about the decrease in demand, you can visualize from this diagram that if the demand is D1 and it is reduces from D11 to DDD, it's at the same price, it's known as an decrease in demand. Mean to say कि if the same price level पे demand बढ़े या घटे, that's known as an increase in demand and then decrease in demand. Now the question is that what is the basic reason behind it? The basic reason behind it is that it's your taste and in preferences. Okay, so see, at the same price level demand curve switches from the DD to D11. This is an increase in demand, and at the same price level demand curve switch from D11 to DD. This is a decrease in demand. Thank you. Good morning everybody. In the last previous video we took the live sessions as well as the everything was mentioned into the blackboard and I taught you about the price elasticity of the demand. ओके, सो अभी मैं आप लोगों को नोट्स बताने जा रही हूँ और उस नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. इन केस इफ यू हैव एनी इट्स एंड एनी बट्स, यू जस्ट विजिट टू माई यूट्यूब चैनल, go to the comment box, subscribe, mention everything else, whatever problem you have, and you can DM me and please subscribe my channel. Okay, just listen. The price elasticity of demand, simply we can say is that the percentage change in the quantity demand divided by the percentage change in a price, where the ED is bifurcated in three major parts. The first is the price elasticity, the second is the income elasticity, and the third is the क्रॉस elasticity. What is elasticity of demand? यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होने से उसके डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है, इट्स कॉल्ड एज द elasticity of demand. Okay, so as far as the price elasticity of demand is a concern, the percentage change in a price divided by the percentage change in the quantity demand. Okay, so the formula of the price elasticity of demand will be the percentage change in the quantity demand divided by the percentage change in a price. Okay, so the elasticity is a concept in economics that talks about the effect of change in one economic variable on the other. Okay, so the numerical formula of the elasticity of demand will be, as we studied in our last video, that the del Q divided by Q divided by del P divided by P, and everything I mentioned in my last video. So I hope you guys should not feel any sort of the problem. Okay, where the del Q stands for the change in quantity, Q is an initial quantity, del P is a change in a price, and the P is an initial price. Now we will be sort out this formula and we will put del terms in one side and without del terms into the one side, and we will try to solve it out and we will get the answer. Just have a brief glimpses of this table. If the price of some particular pen is a 10, and if the price reduces from the 10 to the 5, so as per the price elasticity of demand, the quantity of demand will be increased because the price decreasing, demand increasing. Just mention
just mention the digits to the formula where del q क्या है आप लोगों का? The del q is a 20 and the del p is a 5 and initial p is a 10 and initial q is a 20. Put the formula, solve the answer. Trick is clear. ओके ये ट्रिक्स जब बच्चा स्टूडेंट्स बुक्स में सर्च करता है तो वो समझ ही नहीं पाता, और ये जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूं, इट्स रियली अ वेरी इजी एंड कंसल्टिंग विद द top books. So that's why if you have again any query, you can contact to me at my YouTube channel. Okay. So next we come is that the types of the price elasticity of a demand. Okay. हम लोगों ने हमारी जो previous class में जो study किया था, वो स्टडी हम लोगों ने किया था, हमने हर चीज को किस में बताया था? ब्लैक बोर्ड पे बताया था। अब मैं आपको हर चीज जो शो कर रही हूं वो किस में शो कर रही हूं? नोट्स पे शो करने की कोशिश कर रही हूं। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिसिटी मीन्स द E इक्वल्स टू इंफिनिटी। इन परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अ कंज्यूमर इज वेरी इलास्टिक towards the price. If the price will increase, he will decrease his consumption, vice versa. So we can say is that the OP is a favorable price and he want to consume only on this price. If the price will reduce and increase, he will change his consumption level. That's why the elasticity of demand in a perfectly elastic is an infinity. So if in examination the question comes, the curve of the perfect elasticity is an horizontal and the elasticity is an infinity. इससे ज्यादा आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ओके क्योंकि बी अ स्मार्ट वर्कर नॉट अ हार्ड वर्कर। बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ होता है लेकिन स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बाय कीपिंग दिस थॉट इन माय माइंड आई हैव मेड सम very good and attractive notes for all the guys. Okay, now we will talk about the next topic, that is a perfectly inelasticity of demand. The perfectly inelasticity of demand says that either the price increase or decreases, the demand is no change. For example, this curves applicable for those commodities जिसका कंज्यूमर किसी भी कॉस्ट पे मीन टू से बाय हुक और बाय कुक कंज्यूम करना चाहता है। मीन्स जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं ना, उसके लिए कंज्यूमर की डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। इसके लिए इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, मैंने इसको भी डायग्राम्स के थ्रू बोर्ड पे बताया था। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो डिमांड्स होती है जिसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होता है और चेंज इन प्राइस क्या होता है? कम होता है। आप इजीली देख सकते हैं इस डायग्राम में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का गैप ज्यादा है और चेंज इन प्राइस का गैप कम है। सो दैट्स व्हाई del Q is greater than del P and elasticity is a greater than 1. मैं नहीं सोचती कि मुझे हर चीज को वापस आपको बताने की जरूरत है। मैंने अपने प्रीवियस लाइव वीडियोस जब मैं आपको दे रही थी तो मैंने हर चीज को ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको बताया था। ये सारे डायग्राम्स तो मैं आप लोगों को इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप जब मेरा प्रीवियस वीडियोस देखेंगे और उसके बाद जब ये जो नोट्स आप लोगों को शो कर रही हूँ, जब आप उन पे विजिट करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। एंड अगेन आपको कोई कंफ्यूजन्स है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मुझसे कांटेक्ट करें। एंड प्लीज मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि चेंज इन अ प्राइस इज अ मोर एंड चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड इज अ लेस। सो द del P इज ग्रेटर देन del Q इज लेस देन 1. सो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है बुक्स को पढ़ते बट वो समझ नहीं पाता। बट जो चीजें मैं आपको बता रही हूं, इट्स वेरी कंटेंटिव, इट्स वेरी लॉजिकल एंड इट्स वेरी पॉइंट टू पॉइंट। ओके, so please like and please subscribe my channel. Next आ जाता है unitary elasticity of demand. It says the percentage change in a quantity demand is just equal to percentage change in a price. So that's why the curve is downward sloping and E is greater than 1.
ओके, तो इसी के साथ आज का टीचिंग मैं फिनिश करती हूँ. कल मैं वापस आऊंगी नए टॉपिक्स के साथ, दैट इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड द यूटिलिटी एनालिसिस. टिल देन, डेली विजिट माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.